different topic, but रो ships, रो कार्गो क्या होता है, उसमें भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है that how will you prepare place spaces for loading cars or vehicles, and ये ships हैं क्या? Probably there are of course presently not as many number, and it is going to come to India also sooner or later, but Europe, Mediterranean, it was quite famous. So we will discuss, we will see what all we can. I can make you aware of the dangers associated with these type of ships. Now रो as I told you, it's not, the questions are not difficult, only आपकी थोड़ी सी writing power and little bit of understanding that what you are doing and हमने क्या चीज़ करनी है, कैसे करनी है, क्या लिखना है, थोड़ी सी knowledge होनी चाहिए. Rest I think for theory you can write and try to write in steps, bullets. Yes, 1 2 3 4 essay type में नहीं लिखना, especially precautions, hazards. So let's start with this रो ships. रो है क्या चीज़? Now if you see this, most of you must have seen, I don't know any of you have worked on these type of ships, car carriers or ro ships? Any of you have worked? No, sir. Yeah, chalo, very less. So otherwise there are people, Indians working on these type of ships, Indian officers are there. So ro ship is again one of the most successful types operating today, and its flexibility, ability to integrate with other transport systems and speed of operation made it extremely popular on the many shipping routes. Like I told you, Mediterranean, Europe was very famous. Today also when you go to English Channel, you see a lot of ferries crossing, people do their jobs, they travel from one country to another country on these type of ships. It is defined basically a ship which is being a passenger ship with ro cargo spaces or special category spaces. So इसमें दोनों है. So overall role of ship means a ship which has one or more decks, either closed or open, not normally subdivided, and generally running the entire length of the ship. So this is a little bit, the ship's design is such, so trade is such, operations are such, but उसके साथ थोड़े से dangers भी associate हो जाते हैं when you have this entire length with no subdivision in which goods packed in packaged form or in bulk or road vehicles including tank, trailers, cars, anything can be transported and can be loaded or unloaded normally in a horizontal direction. Now this is just to give you a fair amount of idea. You see these ships, there is straight decks, not many subdivisions, so in case there is a ingress of water, so you can well imagine. Other ships we have subdivision, one compartment is full, doesn't make a difference, but here the entire thing will get flooded. So these are the very big dangers with the, whereas the construction of course, but there are a lot of rule regulations which have changed the design and taken care of the safety. Now despite its commercial success, रो concepts always had its critics. क्यों? Accidents होता है, किसी भी शिप का एक्सीडेंट होएगा तो we all think अरे यार these ships are not good, these ships are dangerous. So ये तो हर ships के साथ, टैंकर्स में कुछ हो जाता है तो people feel अरे टैंकर्स are dangerous. कंटेनर्स में कुछ होता है, कंटेनर्स break into two, then people say उसमें there is lot of time fires or accidents take place. So ये तो सब ships के साथ है, if we have to be careful. So again इसके disturbing factors were, these were the good ships. Passengers आप अपनी कार लेके आओ from one place, park the vehicle also, and you can stay in the cabin. So these were very useful type of ships. But again the two accidents which basically they were the worst
and catastrophic capsizing of these two ferries, Herald of Free Enterprise in 87 and Estonia in 94. So unse thoda sa things became different and rule regulations become strict because loss of life. Yeah, loss of life हुआ, the governments wake up. Now इस चीज के लिए इसके लिए publication code of practice for roll of ships, stowage and securing of vehicles. So जहाँ तक हमारा काम है was first published in 91, then 96, 2003, and fourth edition is retitled as guidance document published in 2019. So इसके अंदर उन्होंने, like we have all the codes for different cargos. So here also this is like a sort of code which basically gives us the guidance for stowage and securing of vehicles. Because you can imagine you are carrying so much of vehicles, cars, trucks, trailers, anything. So उनकी जो securing है, loading है, it needs a little bit of specialized, knowledge. The purpose of the guidance is to provide detailed information, safe procedures to be followed. Now again it replaces your earlier version of 2003. So basically if you see what are the key points, what we have to see or what we have to keep it in mind. The first thing he says, during the voyage lashing should be inspected at intervals, which is very common. After the watch, the duty officers go, they take a round and report back to the bridge that everything is okay. So it's as usual, and of course normal checking of lashing in any ship is a common routine. Lashing should not be released for loading or unloading before the ship is secured, because you are loading vehicles, you never know, कुछ भी हो सकता है. Cargo should be so distributed, again stability, stresses, and with an acceptable upper limit to minimize the forces acting on cargo. So जब आपके पास stability की जो भी options हैं, so we should see that there should not be excessive GM जिससे violent rolling हो. Crew should be familiar with requirements of CSM, cargo securing manual. अब ये तो है नहीं, as an officer you may be knowing everything, chief officer knows everything, but the crew, so this is what they expect, that everyone should be well aware of the documents which you have, cargo securing manual or opening closing of ramps, or they got movable decks. So in सबका operation जो है, everyone should be well aware, and there should be effective maintenance program for all the portable fixed securing devices. ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है. तो ये तो मेजर थी. चलो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें. Few definitions की road trailer, of course everyone knows what is a road trailer. Means a vehicle for carriage of cargo or one or more wheel axles or rear end support on the front end. And vehicle means any road vehicle, road or other vehicle, wheel based cargo, what we call is a vehicle. And vehicle securing point, this is important, means the location of a lashing point on a vehicle suitably reinforced. Now I am not saying that the officers, due to lack of experience, but it's again a little bit of knowledge that whenever we are taking lashing of anything, and especially in case of vehicles, so we should take the lashing on the strong point, which is a designated point on the vehicle or any other point. No point taking a very strong wire but to the bumper or to some weak point on the vehicle. Wire नहीं टूटेगी, but that bumper will come out. Maximum securing load, allowable load capacity for a device used to secure a cargo. It's like safe working load. A trained person means a person who has received training to carry out a function that has been authorized by a responsible ship's officer. So trained people means we all are supposed to be the trained persons. We have worked on the ship, so we know how the things are to be carried out. Now what are the principal sources of danger? Now ro-ro vessels make a very small proportion of the merchant marine tonnage. There have been many accidents involving these, giving rise to far worse consequences. Now it's very important to understand the sources of danger which lead to such petrifying situations. Now these sources of danger don't only affect the safety of the vessel but also the passenger and crew. So जहाँ पे आपके पास passenger crew आ गया, so more lives are involved. So what are the basic principal sources of danger when stowing and securing? Unsatisfactory condition, design of vehicles. First of all, जो vehicle आपको present किया गया, हो सकता है उसी की condition ठीक नहीं है, उसी में cargo जो secure किया उसने वही ठीक नहीं है. So first thing तो वही है, cargo badly stored or inadequately secured within the freight vehicle.
जो ट्रक ट्रेलर आया उसके अंदर ही कार्गो की nobody bothers as much we bother about the stability. रोड व्हीकल्स में कौन बॉदर करता है? They keep on filling up to top, whether it is becoming top heavy or bottom heavy, nobody bothers. Unsatisfactory stowage of cargo with respect to size, type and weight of the cargo within the vessel, and failure to accurately declare the weight of cargo. Of course, nowadays it is very less, but people do that where they find there is no weight checking, so they will try to pay less money. So we all try to hide. Free surface effect in tank vehicles and tank containers. अब जो आप व्हीकल कैरी कर रहे हो उसके ऊपर कंटेनर है, टैंक टेनर है, उसके अंदर भी तो फ्री सरफेस होगा, वो भी इफेक्ट करेगा. Poorly maintained ramps, lifts, bow stern doors, portable decks. So these are managed. Is basically, I told you these ships have movable decks. जिनको intermediate decks are movable just to adjust for the height of the vehicles. Poorly maintained, inadequately illuminated or badly planned decks, wet decks, inadequate supervision of vehicle movement, and reversing of vehicles on the vehicle decks without realizing, because there's a lot of vehicles movement is there, a lot of people are there. So this is again for the guys who are operating the vehicles. They got to be very careful. So they are also trained कि आपने road पे vehicle नहीं चला रहे हो. On the ship when you are loading, discharging, they also know all the proper procedures. Failure to apply brakes, failure to secure vehicles. So these are all the principal sources. So अगर आपको prepare करना है ship को, so you know कि यार यहाँ पे mistake हो सकती है. Insufficient, incorrectly applied lashings, or use of lashing equipment wrong type. Inadequate strength regard to the mass and center of gravity of the vehicle. Free play in the suspension of vehicles. A lot of vehicles which have got free play, ship is rolling pitching करेगा. They, if अगर आपने gap vehicles में ठीक नहीं है, so these vehicles will hit each other, scratches, damage, cargo claim. Failure to comply with correct declaration, placarding, labeling, stowage and segregation requirements for road vehicles carrying DG, dangerous goods. Now if you are the duty officer, so you have to be careful. So आपके पास ये सारी information होनी चाहिए, what you are going to do, what type of cargo you are going to load, what type of vehicles you are going to load. Inadequate securing arrangements for specialized vehicles. Now protection of personnel on ramps and vehicle decks. A lot of accidents have taken place. The people were just roaming around on the decks and the vehicles were being loaded or discharged, and the vehicle came and hit him on the spot dead. फिर इंक्वायरी शुरू हो जाएगी, ड्यूटी ऑफिसर बताइए आपने क्या क्या किया था और क्या क्या नहीं किया था. So they won't say what you have been doing, so they will only check what you have not done. So movement, stowage, securing of vehicles on vehicle decks should be supervised by a trained person, and you have to make sure that there is nobody allowed to walk on the vehicle decks. So before being accepted for shipment, every road vehicle should be inspected externally. Again, इसके लिए only you are not there. So whereas the inspection is concerned type or damage to cargo, there are a lot of people. Additionally, the ship owner hires what we call telemen. So they also see that the cargo what they are loading, they also make the documents and then bring it to the chief officer for signing. But otherwise, it's a tough job on the car carriers for the chief officer. That yes, lot of damage, small scratch. Imagine you are carrying Mercedes Benz, Bentley and all expensive cars. उसके थोड़ा सा scratch भी आया तो people will definitely make a hue and cry. All cargo to be documented. Loading doors, flood barriers, ships ramps, car platforms, retractable car decks and similar equipment should be operated only by trained person. ये नहीं नया OS आया, हाँ ठीक है मेरे को आता है उसको दे दिया. So as a duty officer, you cannot be everywhere. So आपकी जो टीम है वो आपको ही ट्रेन करनी पड़ेगी so that no incident takes place. Safety systems of work should be provided in order to ensure drivers do not move vehicles unless they are directed to do so by a trained person. So ये organization जो है कि जो stevedores, now you people have been keeping watches, so you know the system. Stevedores हैं किसी के साथ, instead of talking to individual, you talk to the जो उनका head है, जो supervisor है, foreman है, जो भी है उससे आपने बात करनी कि भैया this is what it is, I don't want like this. It should be well organized and safe manner. Passengers, drivers not permitted to remain on vehicle decks without express authority.
और ये रेगुलेशन भी है SOLAS का। यानी इसके लिए व्हाट डू वी डू, प्रिकॉशंस की ठीक है, रेगुलेशन तो है ना, तो रेगुलेशन में साथ ही बोलते हैं प्रोमिनेंट नोट्स शुड बी डिस्प्लेड। तो ये तो है नहीं कि आप वॉच में आके नोटिस तो नहीं मैं लगा सकता, अब मैं वॉच करूंगा या मैं नोटिस लगाऊंगा। सो दिस इज अगेन द शिप इज हाउ द शिप इज केप्ट, हाउ द शिप इज मेंटेन्ड फॉर द outside people who are going to, or these car drivers who are going to come to your ship. So they should be on every ship. छोटी छोटी चीजें, no smoking near the gangway, DG on cargo on board, isn't it? All these things we write. तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। Ramps which are not used by vehicle should not be used for simultaneous pedestrian access. तो ये भी एक है कि रैम्प्स में वहीं कारें चल रही, वहीं बंदे चलने शुरू हो गए, अगेन देयर इज अ चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। हैंड सिग्नल्स यूज्ड बाय व्हीकल डेक पर्सनल। अब ये जो हैंड सिग्नल हैं, वी आर वर्किंग विद द मल्टीनेशनल पीपल एंड यू आर गोइंग टू डिफरेंट कंट्रीज, सो इसके लिए ये जो सिग्नल है दे शुड बी अनएम्बिगुअस। ये नहीं कि आप कह रहे हो आने के लिए, दैट गाय इज अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर आस्किंग देम टू गो अवे, इजंट इट? सो इसके लिए ये जो स्मॉल स्मॉल सिग्नल्स हैं, दिस इज द वे, दिस इज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दैट यू लर्न कि यार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ lowering, hoisting, coming, not coming, again to again as per the code of safe working practices for emergency way. So it should be same कि आप जो कहना चाह रहे हो the other person should understand. Most of the time any mishappening takes place because of wrong communication. आपने कुछ कहा, उसने कुछ समझा। At each vehicle point, access point, ship, there should be at least one life buoy, self-activating light, and one safety line. रैंप पे है, कुछ भी हो सकता है, एनीबडी फॉल्स डाउन, व्हाट यू गोइंग टू रन अराउंड लास्ट मिनट। तो ये चीज़ें एज अ ड्यूटी ऑफिसर, कोई भी आपको क्वेश्चन करे, पूछे कि हाँ यार आप ड्यूटी में क्या करोगे, कैसे करोगे, ये चीज़ों का आपने ध्यान देना। एंड वेयर प्रैक्टिकेबल परमानेंटली मार्क्ड वॉकवे शुड बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल दोज हु रिक्वायर एक्सेस टू व्हीकल डेक्स बोथ ड्यूरिंग कार्गो ऑपरेशंस एंड व्हेन द शिप इज एट सी। सो दीज वॉकवे शुड ऑल्सो बी वेल इलिमिनेटेड। Vehicle should not be parked in such a way as to obstruct permanent walkways. Shell doors, emergency escapes, वो तो सब कार्गो के लिए, डेक कार्गो हमने पढ़ा कि this is what I have to ensure as a duty officer कि emergency equipment is there, firefighting equipment is there, emergency escapes are there, उनको कभी भी ब्लॉक नहीं करना, and they should be highlighted, normally be painted red, so that everyone knows कि नहीं यार ये door leads to some special place. Appropriate instruction should be made to inform persons on vehicle decks of the dangers involved or the dangers from moving vehicles. And persons PPE all the time आपने तो पहना है. So first of all, again as a duty officer you set the trend. आप ही अगर चप्पल में घूमोगे तो do you think the other people are going to wear shoes? So first of all I should be in proper PPE. And then make sure the other people who are working in your team, they are also wearing proper this protective equipment. Why? Because even stevedores को वो चप्पल में आ रहा है, अगर उसको लग गई, the ship has to pay the claim. इसके लिए you have the right politely कि भैया please come in proper shoes, चप्पल के साथ नहीं आना चाहिए। Crew members, shore workers should exercise great care when supervising, driving, marshalling, stowing and securing of vehicles. And again to reduce accumulation of fumes, ये भी एक dangerous affair, इतने व्हीकल चलेंगे तो fumes तो होगा ही, बट उसको कम करने के लिए that we should make sure गाड़ी का engine, let the people start only when required, and as soon as the cars are parked or vehicles are parked, switch off the engine so that there is no unnecessary fumes in the area. Smoking, no naked lights, no smoking, ये तो common चीज़। Vehicle decks, ships, ramps, lifting appliances should be reasonably practically be kept free of water or grease. अब गाड़ियाँ हैं, there is a possibility that something, some liquid, some oil can leak out and it can make the things different. अब उस चीज़ के लिए आपके पास you should be equipped again with the equipment. जैसे आपका सोप ऐप है, immediately उसको साफ करने के लिए equipment भी होना चाहिए। By chance अगर कुछ लीकेज होती है, before any accident takes place, area should be kept free of water or oil or grease. Retractable car decks, lifting appliances should be securely locked when in stored position. Accidents have taken place that when the person was
this decks was not locked, and वो unnecessary they kept lowering or without person being seeing कि हो क्या रहा है, and it can be dangerous. It can damage the cargo, or it can even cause an accident to the person also. Now, vehicle decks, ships, ramps, lifting appliances and securing arrangements. So सबसे पहले अगर आपके पास ये है तो आपके मन में क्या आता है? If I am the duty officer, first thing, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, any lifting appliances, whether it's a ships, ramps or decks or vehicle decks हैं, कुछ भी चीज़ है, इनकी जो है again testing should be of, first of all they should be of sound construction, isn't it? ये तो है नहीं कि पतली सी प्लेट का कुछ बना हुआ है जो आपको दिखता है कि कुछ आया तो टूट जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स शुड बी ऑफ साउंड कंस्ट्रक्शन. ऑफ कोर्स जब आपका शिप है, शिप में ये प्रॉब्लम नहीं है. रेगुलर सर्वेज होते हैं, द सर्वेयर्स कीप सीइंग दीज थिंग्स ओनली, दैट शिप इज ऑफ साउंड कंस्ट्रक्शन. बट प्रॉब्लम आती है कि आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ द रस्ट एंड ऑल दैट, दिस प्लेटिंग में बिकम थिन डाउन. So this is what we have to see. If at any stage you feel the proper, that the ramps or the ship's decks or anything else is not of proper strength, point out. And second, they should be tested, certificated as required by the regulation. And ramp should have a suitable slip resistant surface, anti-skid surface होना चाहिए. Adequate permanent lighting, very common. Doors leading to vehicle decks should have clear signs prohibiting unauthorized entry to vehicle decks. अब ये आप कह नहीं सकते because the persons who are coming, they will also see. अगर आप वहाँ पे लिख दीजिए, जैसे हम अपना ISPS में लिखते हैं, isn't it? तो वैसे notices अगर आप लगा दीजिए, then these people, then you can tell them also कि भैया these places are not for roaming around. Adequate supply of equipment to deal with emergency should be readily available for vehicle decks. For example, drip trays, absorption material for minor liquid leakages like SOPA. ये नहीं कुछ हो गया and then we start searching invariably, तब कुछ मिलेगा भी. Electrical equipment should be regularly inspected. क्यों? व्हीकल चल रहे हैं, कुछ भी है, all these wires, जिस एरिया में भी आप काम कर रहे हो, so इनके ऊपर भी आपने ध्यान देना. Retractable car decks and lifting appliances, warning notices, operating instructions of adequate size should be prominently displayed. car decks में भी accidents हुए हैं, so इसके लिए वहाँ पे भी how to operate, क्या क्या करना है. वैसे तो bosuns are good, they know these things very well, but आपकी भी responsibility है कि you should also see that everyone is well aware. Sometimes the new joiners may not be aware. Persons operating these decks should ensure no person is at risk when the equipment is moving. And where the operator of the ship's ramps or decks or lifting equipment do not have a clear view, कहीं बार हो सकता है that you are maybe operating a deck and the place you are operating, you may not be able to see the things. So you should have something, some signaling system. No person should be lifted by ramps or car decks. कुछ भी हुआ, मशीनरी या हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिकल कुछ सिस्टम फेल हुआ, so it will be a again danger to the person. So strictly nothing. Cargo spaces in which vehicle trailers stored should be again the general recommendations, again like what you call the loading discharging precautions. This is what we have to see, is that the area is dry, clean, free of grease. Vehicle trailer should be provided with adequate, clearly marked securing points or other equivalent means of sufficient strength to which the lashings may be applied. दोनों जगह, शिप के ऊपर भी लैशिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, व्हीकल्स के ऊपर भी वहीं पे लैशिंग लेनी है, विच इज द स्ट्रॉन्ग पॉइंट. एंड इफ व्हीकल ट्रेलर्स विच आर नॉट प्रोवाइडेड, फिर कहीं ना कहीं उसके ऊपर ऐसा सिस्टम है जिससे व्हीकल भी डैमेज ना हो. नॉर्मली व्हीकल्स में ये प्रॉब्लम नहीं आती. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट वेयर यू कैन टेक द लैशिंग्स. एंड विच आर vehicles which are not provided with rubber wheels, again some anti-skid surface, some dunnage, जिससे कि we can create some friction. Brakes should be set and should be secured by ship's lashing made of material having strength elongation characteristics. Again we use web lashing, claspers with that ratchet type of tightening. So ये सारी चीज़ें we use. So there are figures, but उनकी कंडीशन क्या है. एज ऑफिसर आप आ जाते हो, लेने वाले तो ठीक है, देयर लॉट ऑफ दिस मटेरियल इज देयर,
जैसे आपकी कंटेनर्स का है, दिस मटेरियल शुड बी अवेलेबल at the place of lashing also. Vehicle trailers carried as part of cargo should be stored close to ship side. Of course, that depends. इसकी permanent markings are there, positions are always fixed, and to prevent any lateral shifting of vehicles, adequate securing points. ये तो securing में हम देख लेंगे. Normally, we store the cargo in fore and aft direction, isn't it, rather than in athwart ship. But in case ro-ro ships पे कभी होता है that you sometime load in athwart ship, we take extra lashing. Wheels should be blocked. वैसे तो आपने brakes लगाई हैं, but in case there is a system, some heavy vehicle is there, so you can make the some extra dunnage or choking system is there, so you can do that. Now, lashing shall not be attached to the lamp brackets, side guards or bumpers except those specially designed for this purpose. काफी बार मैंने देखा अपने general cargo ships used to carry, so those people, the guys who are taking lashing, they find the easy way. कहीं पे तार लगा देंगे, वायर लगा देंगे, and then they say हाँ सब टाइट कर दिए. वहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस है, यू गॉट टू सी कि ठीक है, टाइटनिंग इज वन थिंग, कौन से पॉइंट से लैशिंग ली है. इक्वल टेंशन, only one lashing shall be attached to one aperture loop, and where practicable, arrangement of lashing on both sides of the vehicle should be same. So I think we have some sketches here. वैसे तो on these ships you have these permanent markings, permanent lashing की eyes रहती हैं, so you can't change that. So these angles are important. So these angles basically एक तो आपकी fore and aft movement को रोकते हैं, एक आपकी tipping को रोकते हैं, एक sliding movement को रोकता है, एक आपकी tipping को रोकता है. Now car decks, you have seen how these vehicles are. Basically this is the strong point जो manufacturer ने specially बनाया. So you take the lashing same way in the aft. Sometimes you have to choke the wheel, so you have this type of system. Web lashing ऐसे भी कर सकते हो. कार्गो सिक्योरिंग, अगर आप देखिए लोडिंग में तो ठीक है, आपने प्रिकॉशन ले ली, रैम सब कुछ चेक कर लिया. सिक्योरिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. Now again, if you see the cargo securing of any cargo, basically it is dependent on the securing means, the weight and type of vehicle. कौन सा कार्गो हम सिक्योर कर रहे हैं. whether the cargo is weighing 1 ton and if it is weighing 50 ton, definitely your securing systems will change. So means of transport must be equipped for lashing vehicles correctly, and lashing points such as lashing rings, lashing pots, ये चीजें जो हैं nobody bothers. कि lashing eyes जो हैं उनकी strength ठीक है कि corroded हैं, thin down हुई हुई हैं. When lashing belts are used, care to be that same number of belts are used forward and aft, ताकि उनमें the vehicle remains in their position, they do not shift. कि आगे वाली जो है उसमें ज़्यादा लगा दी, पीछे वाली में कम. So normally the ro-ro ships या car carriers में ये problem कम आती है, because you got the permanent fixed eyes are there. Now cargo securing examples, again if you see, use lashing belts, special automobile belts, lever ratchet tensioners are there, and lashing belt should be tight but not highly pre-stressed. यहाँ पे भी आ जाता है कि आपके पास ratchet टाइप के tensioners हैं जो आपने फिगर में भी देखा, that you keep on tightening without realizing कि व्हीकल का जो पार्ट है जहाँ पे सिक्योर किया वही बेंड होना शुरू हो जाता है. सो दैट इज व्हाई इट इज शुड बी जस्ट टाइट इनफ एंड नॉट शुड बी ओवर स्ट्रेस नहीं करना उसको, ज़्यादा टाइटनिंग नहीं करना. ऑन इंक्लाइंड सर्फेसिस एंड इन केस ऑफ स्टोरेज अथॉर्ट शिप, व्हील चोक्स, अगेन अगर आप व्हीकल को अथॉर्ट शिप लोड कर रहे हैं, देयर कैन बी सम टाइम पॉसिबिलिटी व्हील टेक एक्स्ट्रा लैशिंग, विल चोक द व्हील्स. And care further must be taken to ensure only wheel chokes, ये तो ठीक है, hooks are only tension and not stressed, no damaged belts, of course lashing material आप देखोगे. And if the vehicle is so equipped, its parking brake must be applied, gear engaged. So ये loading के time में of course these drivers know, but on and off we have to also see that these people they carry out this. And again you have sufficient number of persons to enable the lashing operations. तो लैशिंग आएंगे जिन्होंने करना है, सो इट इज़ नॉर्मल. जैसे आपने कंटेनर शिप्स पे देखा, लॉट ऑफ पीपल आर देयर,
So they keep an उनको मटेरियल भी देना जो है वो हमारे शिप क्रू की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. एंड किस टाइप का मटेरियल है वो एज अ ड्यूटी अफसर you point out to chief officer. Basically chief officer keeps these things ready well in time, well before. Now before accepting vehicle, it is essential to ensure doors, windows, tank fillers are securely closed. Tires pumped up to sufficient air. External damage has been recorded. अगर आपको कुछ दिखता है, so in car carriers this way, of course the stay is less, but there is lot of work, lot of jobs. Cargo watch जो है is quite hectic. Because each and every cargo and they come with tremendous speed. एक के पीछे एक कार आ रही है. So making a note of it, bringing it to the chief officer's notice is very important. Installed or dismantled accessories, spare parts are complete in good condition. पता है you will be assisted by this teleman also, but same time आप अपनी छोटी बुक आपकी जो पॉकेट में उस पर भी लिखते जाइए. ये नहीं कि certain parts are missing, कल को शिप के ऊपर क्लेम आ जाए. फ्यूल टैंक्स उसमें भी ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए, ओनली 3 लीटर जस्ट फॉर ऑपरेशन. बैटरी उसको भी ज़्यादा टच नहीं करना कि ना उसको डिस्कनेक्ट या कनेक्ट करना है. एज इट इज़ लीव इट लाइक दैट. Now during loading and unloading operation, care should be taken to ensure angle of loading ramp is no more than 12 degrees. So ये तो आपकी रैम्प के लिए जो प्रिकॉशंस हैं, ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है. व्हाट ऑल द प्रिकॉशंस यू विल डू व्हेन ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ रैम्प्स. So इसके लिए again just for your guidance, because if you go, first thing is there is a operation manual. कि जो भी आपके रैम्प्स हैं उनको अपने साइड डोर्स या बाउ डोर्स या जो भी हैं उनका मैनुअल रहता है जिसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देता है हाउ टू गो अबाउट क्लोजिंग ओपनिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल तो गियर आई गो थ्रू दैट मैनुअल एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. एंड सेकेंड थिंग विच नॉर्मली द मिस्टेक इज मेड, हम जल्दी करते हैं, यू मस्ट हैव बीन lowering, securing the gangway, isn't it? Gangway में तो सबने पार्टिसिपेट किया होगा कि आपने ship is coming to port and then you have to remove the lashing and all. So वहाँ पे भी और even in these ramps, now these ramps are little heavier side पे, so इनको जब आपने ऑपरेट करना है, first thing you have to see जो वायर है जिसके ऊपर इसका पूरा वेट आने वाला है, that should be tight before you remove the cleats or securing arrangement. Lot of time we have seen those wires are slack, wire drums neutral में किए, उसकी वायर थोड़ी slack हो गई, and then immediately nobody bothers and they start removing the cleats. So यहाँ for these ramps and all, this is the first precaution, that first thing you see that जिस भी चीज़ से आप हैंडल कर रहे हो, whatever you call this, the controller, उसके ऊपर lamp test, that you have to see all the lamps are working, all the alarms are working, and then you make sure that the wire is first tightened and then you ask the crew to remove the lashings. So this is often made a mistake, and then आपने lashing निकाल दी and you get a even jerk on the gangway also. So gangway के लिए भी before you start removing the lashings, please make sure that your wire has got enough, has picked up the slack. So wire is tight so that when you remove the lashing, full weight will come on the wire, nothing will happen, no jerk will come. Experienced drivers are used, handling personal wear, special working clothes with metal fastening on zips. Right hand और लेफ्ट हैंड ड्राइविंग व्हीकल्स, उनकी स्टोवेज आपने देखनी है, ये नहीं कि व्हीकल स्टो कर दी उसके बाद बंदा उसके अंदर जा ही नहीं सकता. So again general criteria should also be taken into account. So these are the basically things which we are going to do. Stowage spaces in which deck surfaces may be at high temperature. कोई ऐसा भी हो सकता है कि yes they may be above the engine rooms, वो भी देखना है कि ऐसा ना हो. The decks are, if they are looking, so we avoid loading vehicles with rubber tires. Now vehicles are generally fitted with suspension, which means they may vibrate in vertical and horizontal axis. So clearances, this is again for the clearance कि आपको दो vehicles के बीच में कितनी clearance देनी. Spacing to the front is not less than 30 centimeter and on the side not less than 10 centimeter. So this is just a general thumb rule that yes, because of the suspension of these vehicles, so at least forward and aft 1 feet and 10 centimeter, it depends. You are the person on the spot and you have to see this lashing, these designated areas are marked,
बट इन केस यू फील कि नहीं यार व्हीकल इज क्वाइट बिग, अगर आपको ज़्यादा स्पेस रखनी है यू कैन डिसाइड, बट उससे आपकी ये इफेक्ट नहीं होना चाहिए, स्टोरेज को इफेक्ट नहीं होना चाहिए, लैशिंग को इफेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं कि लैशिंग आइज ही नहीं है वहाँ पर। अब आपके बाउ डोर्स, यहाँ पे भी है कि प्रिकॉशन, बाउ डोर्स, टर्न डोर जो भी हैं, so basically there are two type of bow doors. One is we call visor doors, opened by rotating upwards and outwards about the horizontal axis through two or more hinges located near the top of the door and connected to the primary structure of the door by longitudinal arranged lifting arms. So visor doors are very common. Side opening doors, they are either by rotating outwards about a vertical axis through two or more hinges or by horizontal translation by means of linking arms. So ये तो है, but इनके लिए again precaution I told you, side shell, bow stern doors are to be fitted with adequate means of securing and supporting so as to commensurate with the strength and stiffness of the surrounding structure. So ये तो है कि construction उसका design हो तो perfectly all right, but उसके बाद उसकी closing, opening and maintenance अगर नहीं proper हुई, so या फिर they will start leaking, या वो प्रॉपर बंद नहीं होंगे। अगर आपने इन व्हीकल्स, इन शिप्स पे नहीं काम किया, यू हैव सीन दिस साइड डोर्स, कंटेनर शिप्स कॉमन, बिग कंटेनर शिप्स दे हैव दिस पायलट एक्सेस फ्रॉम द साइड डोर्स व्हिच ओपन इनटू योर अंडर डेक पैसेज। तो उसमें भी काफ़ी टाइम आपने देखा होगा कि पानी लीक करता है इफ द पैकिंग इज़ नॉट गुड, और अगर वो डैमेज हो गया थोड़ा सा। So where packing is required, the packing material to be of comparatively soft type, supporting forces to be carried by steel structure. So you can report to chief officer. Of course, bosun will definitely tell chief officer will be taking care, especially in ships पे or these ro-ro ships, bow doors and all, they are उनका arrangement ऐसा है, you got one door and उसके behind you got another watertight door, and in case this door starts leaking, so you have another door behind which will not let the water come in. So after these accidents, the rules has changed. Securing devices are to be simple to operate and easily accessible. And securing devices for these bow doors, stern doors are to be equipped with mechanical locking arrangement, self-locking or separate arrangement, or are to be of gravity type. So opening and closing as well as securing and locking devices are to be interlocked. तो ये सारा सिस्टम आप, it cannot be generalized, it has to be ship specific, जैसा जैसा होगा. And now since these doors, ramps, they are a huge structure, so as a duty officer you have to be present whenever these things are handled. So where hydraulic securing devices are applied, system is to be mechanically lockable in closed position. This means in the event of loss of hydraulic oil, कभी लीकेज हो गई तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये डोर बंद ही नहीं हो सकती. So they have that system in case there is a pressure or hydraulic oil leaks, तो आपका डोर बंद हो जाएगा, it will remain locked, you can't open it, so it will not be left in an unlocked position. So ये requirements हैं. So hydraulic system is normally built in such a way that anything happens it will keep the door closed. So ये भी हमने देखना है. Indicator lights सेफ्टी के लिए, बिकॉज काफ़ी आप ब्रिज वॉच कर रहे हो, थोड़ा सा ही बैड वेदर हुआ, देयर आर चांसेस ऑफ वाटर बाउ डोर्स पे, साइड डोर्स पे, कहीं से भी आ सकते हैं. तो उसको आई शुड हैव कुछ ना कोई तो मीन्स होने चाहिए डिटेक्ट करने. सो इंडिकेटर लाइट्स, ऑडिबल अलार्म्स टू बी प्रोवाइडेड ऑन द नेविगेशन ब्रिज and on each operating panel to indicate doors are closed and their securing locking devices are properly positioned. तो आज भी हैं whatever, even on these ships or other ships, you must have seen that there are these watertight doors, उनका अलार्म ब्रिज पे रहता है. Invariably you will find engine room का डोर जो है to the under deck passage वो हमेशा खुला है. But you got to be careful when you are on the watch. जो watertight doors हैं which are to be kept closed at sea must be kept closed at sea. Indication panel to be provided with lamp test function. That's what I told you, that at least audible and visual both the alarms should be working. Audible को तो आप चुप करा सकते हो. ये जो visual alarm है, this can only go when the action is taken. अगर डोर खुला है तब तक रेड लाइट नहीं जाएगी जब तक आप डोर को बंद नहीं करोगे. For passenger ships, water leakage detection system with audible alarm and television surveillance is to be arranged.
provide an indication to the bridge and to the engine control room for the leakage of these doors. तो ऐसा सिस्टम है, then I should be aware कि हाँ यार ब्रिज वॉच मैंने करनी है, ये तो है नहीं. So if something is happening, some water leakage is coming, so it is again part of the duty officer's responsibility. Then for cargo ships, water leakage detection system with audible alarm, indication to the bridge, and operating and maintenance manual for side doors, stern doors to be provided on board and to contain all the necessary information. तो ये तो requirement तो हो गई, manual भी आ गया, but पढ़ने का time नहीं. And then we try to do अपनी hemanship कि अभी ऐसे खोलेंगे, ये करेंगे. अब थोड़ा सा आपका, चलो ये तो हो गया आपका सारा सिस्टम की प्रिकॉशंस, लोडिंग, प्रिपरेशन ऑफ द स्पेसिस, कैसे करेंगे, ऑल दीज थिंग्स. ऑफ कोर्स इसमें ज़्यादा नहीं, क्लीनलीनेस, ऑफ कोर्स नो ऑयल, एंड देन सिक्योरिंग ऑफ द व्हीकल्स. अब हमने एक और डेंजर देखा दैट फ्यूम्स का, यार दीज आर एनक्लोज स्पेसिस, बंद हैं, व्हीकल चल रहे हैं, तो देयर इज अ चांसेस ऑफ ऑल दिस फ्यूम्स एक्यूमुलेशन. सो नेचुरली देयर इज अ नीड टू मॉनिटर द atmosphere in cargo spaces. Why there is a need to monitor this atmosphere? सबसे पहली बात तो है कि यस, अगर आप घर में गाड़ी भी चलाते हो, तो अगर आपकी गाड़ी यू गॉट अ गैरेज विच इज लाइक एनक्लोज टाइप, तो यू ऑलवेज फील द सफोकेशन. तो यहाँ पे भी है कि एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम मोटर व्हीकल्स कंटेन हैजर्डस सब्सटेंसेस. ये कौन से इनके एग्जॉस्ट से कौन सी गैसेस निकलती हैं, जस्ट टू मेक यू लिटिल अवेयर. Carbon monoxide from petrol engines and nitric oxide and nitrogen dioxide from the diesel engines, जिसे हम NOx कहते हैं, NOx and SOx. So these hazardous substances can affect people in many different ways. How? Certain substances have tangible immediate effect, others may show a very injurious effects after a person has been exposed for some time. If you are working there, so maybe 4 hours, 6 hours continuously you are working in that atmosphere, so definitely these gases can affect. So इन सारी चीज़ों का कुछ, ये तो safe नहीं हुआ. If I have to stand there, if the people have to work there, and if the atmosphere is not safe, so ये तो फिर बात नहीं है. Ships are not designed like that. So let's see. Carbon monoxide is a colorless, odorless gas which to a lesser or greater extent it inhibits the ability of blood to absorb and transport oxygen. So इसके लिए carbon monoxide is a dangerous gas. It can cause death. If inhalation of this can cause headaches, dizziness, and extreme cases में even it can cause death. And अब आपके जो nitric oxide and NOx, compounds of nitrogen and oxygen together, what we call them NOx, now they are also dangerous for the human health. So इन सारी चीज़ों को देखते हुए, if you see these gases how they affect, of course these are the basically effect. और measures क्या है, ये तो हमें पता लग गया कि yes, these exhaust gases are dangerous, isn't it? Now what can we do? What measures we can take, isn't it? So only there are three things. Therefore measures should be there, should be considered to minimize the health hazards. So इसमें आपका सबसे पहला आता है रिडक्शन इन एग्जॉस्ट एमिशन. सबसे पहले तो हम करेंगे कि भाई मिनिमम एग्जॉस्ट एमिशन हो. वो कैसे? सेम व्हाट आई वाज टेलिंग दैट वी स्टार्ट द व्हीकल ओनली व्हेन रिक्वायर्ड. ये नहीं है कि व्हीकल को ऑन करके रख दिया तो उसका एग्जॉस्ट चल रहा है, एक्यूमुलेटिंग द गैसेस. सो फर्स्ट थिंग इज द रिडक्शन बाय minimizing the running of the engines. Second, provision of adequate ventilation. And third, prevention of exposure to the gases. वहाँ पे हम उस एटमॉस्फेयर में अपने आप से जितना कम रहें, जितना less we expose ourselves to these gases. So these are the three means of what we can do, how we can prevent anything going wrong, any health hazard, anything taking place. अगर इनमें से अगर कोई भी आप ऑपरेशन करते हो, कोई भी प्रिकॉशन लेते हो, so these are the means what we have with us. Now to ensure the effectiveness of above recommended measures, it is again essential the atmosphere in the ro-ro vessel is monitored. So this is the need. Here we have to see कि अगर atmosphere वहाँ पे ठीक नहीं है, वहाँ पे gases are there, so we can take any of these precautions. या तो हम ventilation कर सकते हैं, या उसके will let the people get exposed for a lesser time.
Now, ventilation system for ro-ro cargo spaces on ships generally operate according to the principle of dilution ventilation, whereby supply air flow to the area is sufficient for the exhaust gases to mix thoroughly with the air and removed. तो आपने अगर आपके ventilation system, of course, guys who are working on cargo ships, bulk carriers, except tankers, so they know आपका ventilation system या तो supply पे होता है या exhaust. So supply पे भी आप उसको dilute कर सकते हो. You are basically जब supply करते हो तो dilution कर रहे हो. So there are main two types of dilution ventilation: exhaust air ventilation and supply. Now in exhaust air, fans remove the air from ro-ro cargo space, and this is replaced by the outside air entering through the open ramps, doors. So exhaust में क्या है कि आप एक किस्म का low pressure create कर रहे हैं, and then that low pressure is getting filled up by the outside air. Now exhaust ventilation is employed when sub-atmospheric pressure, low pressure is required in the ro-ro cargo space. इसका ज़्यादा benefit कि ये जो गैस है आपके अंदर, exhaust gases हैं, वो कहीं नहीं जाएंगी, because you are already basically exhausting them out. You are creating a low pressure, so वो गैस कहीं नहीं जा सकती. Outside air जो है that will rush in, fresh air will come in. So low pressure prevents the pollution from spreading to adjacent areas. Whereas supply air में, if you put your ventilation to supply, तब क्या होगा? It works opposite. Fans deliver outside air into the ro-ro spaces जहाँ पे already exhaust gases. You are creating high pressure. तो यहाँ से जो air है वो हो सकता है वेंट से बाहर भी जाए, बट किसी और स्पेस में भी जा सकती है. कोई स्टोर्स हो आपके, वहाँ पे भी जा सकती है. तो इसके लिए exhaust measures are better. So if supply air ventilation is used exclusively, pollutants may mix with supply air, be pushed up to internal ramps and contaminate other decks. So इसके लिए normally we prefer the exhaust type of ventilation. So this is basically all about your ro-ro ships and how these ro-ro ships look like. Of course, when you go and work, these are the number of decks which basically run, and how these are your ramps. You can imagine how huge structure is this जिसको आपने handle करना है, lowering and bringing it up. So all these things are basically required. So this is, you got to be really careful. This is how the operation takes place. The cars are driven, all these things are marked, all these things are kept here. And this is the picture you have seen that, there's no subdivision. So you can imagine these areas. Of course, you are not alone, you have the people. So how to manage these areas to be kept clean, how to prepare these areas before loading. So this becomes important. Now you can see, so very fast operation and systematic, but dangerous. If not taken care, then it can create problems. So you got to be very, very careful about this. So this is again like quarter ramps. Sometimes you have stern ramps, side doors. You have the side ramps also. So this again depends on the type of ships and how we are going to work on that. So any questions from anybody? सर रोरो में से नहीं है अभी, लेकिन रीपर में से एक क्वेश्चन था. एरोल फर्नांडिस से पढ़ रहा था, उसको लिखा था इन रिसेप्शन एंड लोडिंग ऑफ कार्गो वाले पार्ट में, आफ्टर लोडिंग ऑल आउटसाइड एक्सेसेस शुड बी सील्ड विद पेपर टू एंश्योर गुड सर्कुलेशन. इसका सर थोड़ा बता दीजिएगा प्लीज. मैं समझा नहीं. नहीं है सर. ऑल एक्सटर्नल आफ्टर लोडिंग all outside excesses should be sealed with paper to ensure good circulation. या उसमें वो क्या कह रहा है कि देखिए, जब आपका रीफर कार्गो लोड होता है, रीफर शिप्स लाइक दे आर टॉकिंग अबाउट, नाउ व्हेन वी आर रनिंग अ रीफर मशीनरी, इजंट इट? नाउ इमेजिन अ कार्गो होल्ड. नाउ इसके अंदर वी आर रनिंग अ रीफर मशीनरी विच इज कीपिंग द एटमॉस्फेयर इनसाइड द होल्ड एब्सोल्युटली कोल्ड. अब अगर ये जो कोल्ड एयर है, नाउ दिस कोल्ड एयर शुड नॉट एस्केप. इज सिंपल लाइक आप अपने घर में एसी चला रहे हो, isn't it? So हम क्या करते हैं, we make sure that all doors windows are closed, isn't it?
तो कई बार मम्मी पापा डांटते भी होंगे, यार यार दरवाजा क्यों खोल दिया, उसको बंद क्यों नहीं करते। शिप में भी ऐसा ही होता है। इंजीनियर्स हाँ आपको सर। हमेशा पॉइंट आउट करेंगे, नाउ इफ वेरी कॉमन थिंग ऑन द शिप, नाउ शिप इज अ ह्यूज स्ट्रक्चर। तो उसमें अगर आपका एसी इफेक्टिव कब नहीं हो, एसी चल रहा है बट इफ यू कीप द डोर्स ओपन, सो व्हाट विल हैपन, एसी की इफेक्टिवनेस ही नहीं होगी। बट अगर हम सारे डोर्स को बंद रखें, चाहे आप हाइड्रोलिक डोर क्लोजर लगाइए, कुछ भी लगाइए, सो यू फाइंड योर अकोमोडेशन रिमेन्स कोल्ड। सो सेम स्टोरी इज देयर कि जब आपने रीफर मशीनरी चलानी है, रीफर होल्ड, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि उसके जो हैच कवर्स हैं, बूबी हैचेस हैं, वेंटिलेटर्स हैं, दे शुड बी, ये नहीं अभी नॉर्मल शिप्स में तो क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे तो यू हैव टू एंश्योर दैट दे आर एब्सोल्युटली लाइक गैस टाइट, की अंदर की ठंडी हवा जो है दैट शुड नॉट बी एबल टू कम आउट, देन ओनली अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, isn't it? So that is the idea of sealing these things. So sometime what happens कि if I know यार मैंने हैच कवर बंद किया है, क्लीट्स भी लगा दी हैं, but still some air is leaking, तो उसको हम temporary arrangement के लिए we put this ceramic tape or some sort of a sealing arrangement till the time we can repair. Okay, that is the idea. Yeah. To keep these all the systems, ventilators, booby hatches, hatch covers, absolutely in a very tightly sealed. एक मेरा फ्रेंड का है, वो पर मंथ 1000 देता है। चलो ठीक है, ओके। वो बोला यस सर, अंडरस्टूड। नहीं, उसने कल मैं बोला तो बोलता है कंफर्म यूलिप में मैं फिक्स हो ही नहीं किया था। वो बोल रहा था मुझे मैं कोई फिक्स नहीं, पर मंथ वो कृष्णा कृष्णा भाई इन्वेस्टमेंट चल रही है। माइक ऑफ कर दो भाई। या समीत की आवाज सबने सुन ली। चलो ओके डियर, सो दैट्स ऑल। एनी अदर क्वेश्चन? ऑलराइट, नथिंग? नहीं सर, अभी के लिए तो नहीं। चलो कोई नहीं बच्चे, ओके ठीक है। ये आपका रो रीफर हो गया, इसके भी नोट्स में आपको डाल दूंगा, बट आई थिंक आपके जो कंबाइंड नोट्स हैं उनमें आपको मिल जाएगा, बट रो के थोड़े मैंने डिटेल में बनाए हैं। आई विल सेंड यू दिस। एंड कल हमारी क्लास है मॉर्निंग में, सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द वेदर कोडिंग। सो मेट की वेदर कोडिंग आई वांट टू स्टार्ट, सो मॉर्निंग में यू गाइस विल बी फ्रेश, सो प्लीज़ कीप दैट वेदर कोड। छोटी सी बुक है ना रेड कलर की, आई होप फॉलो। हाँ जी, प्लीज कीप दैट बुक विद यू। सो सर रोरो से एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो किस टाइप का आएगा? किसमें बच्चे? सर रोरो से ना, रोरो टॉपिक से एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो किस टाइप में आएगा? हाँ देखो, ये भी आ सकता है, जैसे मैंने अभी लास्ट किया ना कि वाई देयर इज अ नीड टू मॉनिटर एटमॉस्फेयर इन द रोरो स्पेसिस, एक ये भी ऐसा भी आ सकता है। देन हाउ टू प्रिपेयर, हाउ विल यू प्रिपेयर द स्पेसिस फॉर लोडिंग योर व्हीकल्स, isn't it? Securing, how the vehicles can be secured. So these are the type of questions. Or how will you opening or handling of these ramps, opening closing precautions for opening closing of the ramps. So उसके लिए भी आपकी अपनी जो नॉलेज है, जैसे मैंने आपको बताया कि yes, opening closing of the ramps and all that, उसकी क्या क्या precautions हैं, कि जो भी आपका सिस्टम है उसको पहले हम चेक करेंगे कि यस ऑल द, जैसे बताया ना समटाइम पोर्टेबल दैट जॉयस्टिक टाइप, तो सारा द अलार्म पैनल जो है, नॉर्मली देयर इज अ पैनल, सो देयर इज अ पैनल। सो उस पैनल पे हमने देखना है हमारा सारा जो इंडिकेटर लाइट्स, अलार्म्स, वो सारा सिस्टम काम कर रहा है। एंड देन यू शुड हैव सफिशिएंट पीपल अराउंड विद यू व्हेन यू आर handling these ramps, because this is a heavy stuff, isn't it? So all the hydraulic, pneumatic, electric system needs to be checked. So जो भी system है वो सारा उसको I will check that. Then have the crew stand by, let the crew check these things. ये नहीं है कि आप अकेले ही जाके कि ठीक है आप ऑपरेट करना शुरू कर दोगे। तो इसके लिए हमेशा even as a duty officer you should have sufficient men all the time with you. So जैसे आपने गैंगवे के कहा, अब अकेले जाके अच्छा ठीक है मैं लोड कर लूँगा, एंड देन इफ़ यू नीड अ हेल्प प्रॉब्लम आ जाएगी। सो इन रैम्प्स के लिए ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, टू हैव दिस क्रू ऑल द टाइम स्टैंड बाय, इजंट इट?
Then ensure the entire weight जो मैंने आपको बताया था, what you have to ensure is कि पूरा का पूरा रैंप का जो weight है it is taken on the wires. Sometime wire slack नहीं होनी चाहिए before you remove the cleats. Before उसका securing arrangement या जो भी cleating है उसको remove करने से पहले I will take the wire, I will take the weight on the wires. अब आपने सारा चेक कर लिया, आपकी hydraulic motors, electric power भी है, सब कुछ है. Now if you remove the cleats, now you remove the securings, जो भी जैसा भी सिस्टम है, nothing will happen. बट अगर आपने सपोज वायर पे वेट नहीं लिया, वायर सेलेक्ट है, बाई चांस किसी वे से भी सेलेक्ट हो सकता, जैसे आप क्लीट निकालोगे द होल इट्स अ ह्यूज थिंग, वेट विल कम एंड वायर इट कैन पार्ट, इजंट इट. फिर आपने सारा कुछ देख लिया, एवरीबडी स्टैंड बाय, सब पीपल हैव चेक्ड अप ऑल द कॉर्नर, जहाँ पे भी व्हील्स और उसकी पुलीज और शीव्स जहाँ पे भी हैं वो सब ठीक है, एंड देन फाइनली यू स्टार्ट लोरिंग. सो दीज आर द प्रिकॉशंस यू हैव टू एलेबोरेट एंड राइट इन पॉइंट वाइज कि दिस इज व्हाट आई चेक. तो ये क्वेश्चन भी है, प्रेपरेशन फॉर लोडिंग और प्रेपरेशन ऑफ स्पेसिस, कार्गो स्पेसिस. आई थिंक यू कैन इनफ राइट, इजंट इट. लाइटिंग, सेफ्टी के लिए, क्लीनलीनेस, नो ऑयल एंड ऑल दिस. इस टाइप के बच्चे क्वेश्चन है. एंड सिक्योरिंग के एक आधी बार आप स्केच भी थोड़ा बना सकते हो, नॉट टू मेक अ स्केच ऑफ कार. जैसे आपने देखा है एंगल्स मैंने आपको दिखाए थे 15 डिग्री, 30 डिग्री, 15 to 30 और 15 to 45, 30 to 45 दो एंगल्स होते हैं. लैशिंग के लिए यू कैन इनफ राइट, प्लस इसमें भी लिखा हुआ है. आई विल सेंड यू दिस, गो थ्रू दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो पूरा क्वेश्चन नहीं आता, एक पार्ट बी में आ जाता है, 10-12 मैक्सिमम 10-12 नंबर का, नॉट फुल फ्लेज क्वेश्चन और 25 मार्क्स. किसी ना किसी के साथ कंबाइंड हो जाएगा, कंटेनर्स या किसी और के साथ कंबाइंड हो जाएगा. सो एटमोसफियर वाला भी पढ़ लीजिए, वाई इम्पॉर्टेंट. नाउ यू नो द बैकग्राउंड कि why there is a need to monitor because of exhaust gases और उन exhaust gases का इफेक्ट क्या होता है. इसके लिए उससे हमने बचना है, उससे हमने सबको बचाना है हेल्थ वाइज. सो दैट्स वाई आपको 3 तरीके बता दिए कि यार दीज आर द 3 प्रिकॉशंस, इसमें से कुछ भी हम करेंगे. ओके, ऑलराइट, ओके सर. या चलो, ओके देन, एंडिंग द मीटिंग. सो यू ऑल्सो. Thank you, sir. थैंक यू सर. थैंक यू सर. Thank you, sir.